Hello, Namaskar. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to talk about the orthographic projection. Okay. So before starting the orthographic projection, we need to understand two things. The first one is projection. Okay. Basically, why we are trying to understand these two words, because again and again I'm going to repeat the same thing. Okay. तो हर जगह हमें ये दो words हमें use होंगे. ठीक है. So the first one is projection and the second one is projector. So we need to understand what is projection and what is projector. Right. तो projection का मतलब क्या होता है? Projection means it shows the image of the object. Image of the object. Okay. And projector means the lines or the rays, you can say the rays or lines used for projecting the object is known as projector. Okay, so now we'll take an example कि what do you mean by projector and projection. Let's say कि जैसे हमारे पास mathematics में quadrant system होता है, the same way we have quadrant system in orthographic projection also, or in engineering graphics, right? So this is the intersection point, right? So let's say this is the origin, right? So this plane, the horizontal one, is known as the horizontal plane, and the vertical plane is known as the vertical plane, right? If I'm going to extrude this plane in z direction, अगर इसको मैं z direction में extrude करूँ, so this line will be converted into a plane. So now you can see this is the vertical plane. Now similarly, if I'll extrude this plane along the z direction, I'll be able to get the horizontal plane. So this is the horizontal plane and this is known as the vertical plane. Okay. और similarly हमारा ये जो line point of intersection है, this will also be extruded into z direction. So this will become the reference line. So this is known as the reference line. Okay. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Reference line. So now we are talking about the projection and the projector, right? So the shadow which we are going to get on any of the plane, मतलब ये जो planes है, vertical plane and horizontal plane, जहाँ पे हमें किसी भी object का image मिलेगा, so that's why these planes are also known as plane of projection. इन planes को हम और भी क्या बोल सकते हैं? इसका एक और नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं plane of projection. Okay, जिसको हम लोग शॉर्टकट में पीपी बोल सकते हैं. Okay, so these both are known as the plane of projection. Since it is aligned with the horizontal, so that's why it is known as horizontal plane, and this is aligned with this plane of projection is aligned with the vertical, so that's why it is known as vertical plane. Okay, so that's so simple. And these, since now we'll come back to the orthographic projection. So as we are talking about the projection, the projection ka matlab everybody knows projection means the image or shadow of the object which we are going to observe on the plane of projection, right? For example, let us say we have a point, right? Let's say the name of this point is A, right? And let's say this point is 10 mm above HP, and let's say some mm, let's say 12 mm in front of the vertical plane. So this is the location of the point. Now if I'll see from the front, अगर मैं इसको front से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर, इफ आई एम गोइंग टू प्लेस द ऑब्जर्वर सम हियर, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का इमेज जो होगा, यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट आएंगी, राइट? ये रेज ऑफ लाइट है, तो ये जो रेज ऑफ लाइट है, ये लाइंस क्या होंगी? ऑब्वियसली बात है, इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगी, और जो भी इसके टेंजेंट से पास होती जाएगी उसके कारण क्या होगा? विल गेट द शैडो समवेयर हियर ऑन द वर्टिकल प्लेन फॉर द फ्रंट, right? So this point will be able to get. Now if I'll see from the top, अगर मैं इसको top से देखूंगा तो again we will be able to see the image of this object. So this image is known as, ये जो image हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो इस let's say this image is a small a and this is small a1, right? So these points will be known as the projection. ये क्या होगा? इस a point का ये projection होगा, where we got on the plane of projection. And projector means what? The rays which is coming from a far distance, or these lines which is basically utilized to to observe the object on the plane of projection. That's why these lines are known as projector line. Okay. Now we'll come back to the orthographic. The orthographic projection क्या मतलब क्या होता है? Ortho means 90 degree, that we already know. Ortho means 90 degree. So orthographic projection. So why the name is orthographic projection?
because here the planes, plane means which plane? The horizontal plane and the vertical planes are inclined at an angle of 90 degree to each other. That's why the name is orthographic projection. Now we'll try to observe the quadrant system in orthographic projection. So orthographic projection में I am going to take the क्वाड्रेंट सिस्टम. तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं. दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4. तो हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्ट लेंगे हर एक क्वाड्रेंट पे एंड देन वी विल ट्राई टू एनालाइज. सो दिस वन इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज नोन एज द वर्टिकल प्लेन. नाउ आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट कंडीशन. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सपोज द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो लेट्स से दिस इज अ पॉइंट A, right? And this point is, let's say, the coordinate of this point is, let's say I am taking x comma y. So what do you mean by x comma y? So that means what? This point is technically x mm in front of vertical plane and this is mm, so this is mm, so mm above horizontal plane. ये इसका technical location हुआ, right? Now how to observe the points? So now in orthographic projection, you should always know for the front view, the observer will be always at the right hand side of the geometry. चाहे वो object first में lie करे, second में lie करे, third में lie करे या fourth में lie करे, हमेशा observer जो है वो right side of the plane से observe करेगा front view. This is fixed कि observer यहीं पर रहेगा. और जब ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेन में हो, चाहे फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो, तो ऑब्जर्वर फॉर द टॉप व्यू इट विल बी ऑलवेज एट द टॉप. ओके. तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम कैसे इसका इमेज देखेंगे? तो विल यूज द लॉ ऑफ फिजिक्स. दिस प्लेन, द वर्टिकल प्लेन विल बिकम ट्रांसपेरेंट. तो ये ट्रांसपेरेंट होगा तो क्या होगा? रेज ऑफ लाइट तो कुछ इधर से ही आएगी. ये लाइट जब इधर आएगी तो ये इस पे क्या होगी? इंसिडेंट होगी. इंसिडेंट होने के कारण क्या होगी? रिवर्ट बैक होगी एंड विल बी एबल टू गेट द इमेज ऑन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, राइट? And similarly, if I am going to see from the top, मान लीजिए point it lies in the third quadrant. So now I am going to observe from the top. तो top से अगर इसका top view देखेंगे, now this plane will also become what? This plane will also become transparent, right? तो transparent होगा बेटा, तो हम जब ऊपर से देखेंगे तो what we will be able to see? We'll be able to see the image of this point on this horizontal plane. इसका image हमें कहाँ मिलेगा? इस horizontal plane पे इसका image मिलेगा. Okay, क्योंकि because again the light is going to reflect back. तो reflect back करेगा तो we can only observe the projection on the plane of projection. तो इसलिए हमें plane of projection में इसका image मिला. However, I am going to discuss in detail. Okay, now look at here. तो नाउ आई एम गोइंग टू सी दी फ्रंट व्यू. जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट का इमेज कहाँ मिलेगा? ऑन दी वर्टिकल प्लेन. सो दिस इज दी वर्टिकल प्लेन एंड वर्ड. जब भी कोई पॉइंट हम ऑब्जर्व करते हैं तो फ्रंट व्यू में हम नेम जो लिखते हैं विथ प्राइम लिखते हैं. ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम. एंड टॉप व्यू में जब भी कोई चीज लिखेंगे हम तो हम हमेशा स्मॉल लेटर ओनली ए बी सी विल राइट. Okay, so obviously this is the front view, so I'll be able to get the front view here. And if I'll see from the top, तो top view से क्या दिखेगा? इसका image कुछ यहाँ पर दिखेगा, right? And this is the top view, so I'll name it as a top view. Now once we have done with the projection, then what we need to do? If we'll look at here, तो पॉइंट्स जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, एंड दिस इज योर रेफरेंस प्लेन. और ये जो हमारा प्लेन है, दिस इज इन वन डायमेंशन, दिस इज नॉट इन टू डायमेंशन. आपकी कॉपी भी जो है वो वन डायमेंशन में. तो हाउ टू मेक अ डिफरेंस? दिस इज नॉट, दिस इज ओनली फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस. एंड if we want the marks, then you need to draw in this fashion. So this is your reference line. You can see this is the reference line. This is the 3D projection, right? I'm here I am describing with the 2D ताकि आपको you will be able to understand. अभी हमने एक्स वाई डिनोट कर लिया बिकॉज दिस इज द रेफरेंस वन. ओके, नाउ दिस पॉइंट इज व्हाट? वाई एम एम. क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा? वाई एम एम. तो दिस पॉइंट विल बी, द फ्रंट व्यू विल बी वाई एम एम above HP. तो आई ड्रॉ वाई एम एम above HP or above XY, right? So this is the front view. And this is how much mm? So obviously this is given as YMM. So I'll dimension it. So this is YMM.
नाउ इफ आई सी फ्रॉम द टॉप, अब टॉप से देखा तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आ रहा है और हमारा ये 1D है, एंड हियर इट इज 2 डायमेंशन, क्योंकि सी दिस इज इन 1 डायमेंशन, दिस इज इन 1 डायमेंशन. तो हाउ टू मेक इट लीनियर? तो व्हाट वी नीड टू डू एज पर द रूल इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, वंस वी हैव डन विद द प्रोजेक्शन, यू नीड टू रोटेट द प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, right? So here also we need to rotate the plane 90 degree in clockwise direction. So this is the reference point, right? So about this point you need to rotate by taking x as a radius. You need to draw a arc. तो जैसे ही इसको ड्रॉ करोगे तो this point will be transformed somewhere here. So you can see both the point lies on the same projection line. तो projection line हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, and here you'll observe the another point. So that is the top view of the object. So this will indicate as A. I'll write it A. And this distance is how much it's given? It's given as xmm. I hope you'll be able to understand. Okay. So that means what? If the point lies in the first quadrant, हमने अभी first quadrant में बात किया, तो front view कहाँ lie कर रहा है? Front view lies above xy and top view lies below xy. Okay. Now similarly, I'll go for the second quadrant. If the point lies in the second quadrant, let's say the point lies in the second quadrant, suppose. So now the point is, let's say B, and the location of this point is x comma y, right? Here I'm assuming that x is less than y. Now again, for the front view, the observer will observe from here, and for the top view, the observer will observe from the top. Okay, so this vertical plane will become transparent, and this horizontal plane will is also become transparent. Now you will see from the front, so you'll be able to see the projection on this plane of projection only. So here you will be able to observe the front view somewhere here. So this is, let's say, B dash, क्योंकि front view को हम किससे indicate करते हैं? With dash या prime से indicate करते हैं, right? So this is how much mm. So obviously this the location. So if the point lies in the second quadrant, तो हम क्या लिखेंगे? पहले location क्या लिखेंगे? Point is technically x mm behind vertical plane or y mm above above horizontal plane. Okay, so now you can see, if I'm observing from the front, let's say now I'm observing from the front, so I'll be able to see the projection on the vertical plane. ये हम कहाँ observe करेंगे? Vertical plane में observe करेंगे. Okay, तो हमने, तो now again we need to draw the xy line. So this is your x and y line, and from the front you will be able to see the front view of this line. So this is obviously, this is how much mm? This is nothing but y mm. तो ये parallel है, तो ये कितना mm above दिखेगा? Y mm दिखेगा. Now if I'll see from the top, so I'll be able to see the projection on the horizontal plane, and what will be the name of this? So this will be obviously small b, and this distance is again x. Now, as I already told you, once we have done with the projection, we need to rotate the plane 90 degree in clockwise direction. हमें क्या करना होगा? Plane को 90 degree clockwise direction में rotate करना पड़ेगा. So obviously, I have already assumed that the x is less than y, so this is lesser, right? So again, by taking this one as a origin, O को origin लेके, we need to rotate the plane 90 degree in clockwise direction. So obviously, this point is also going to move, right? So here you will get B. So as you can see here, both the point lies on the same projection line. Okay, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? So here you will get somewhere P. Now I am going to join this with the projection line. तो यहाँ पे हम, sorry, projector line, क्योंकि मैं I am using red color projector line. क्यों red color use कर रहा हूँ? ताकि I will be able to make a difference. Okay, so this distance is how much? Obviously this distance will be x. So I'll write this distance is x. And what about this distance from the xy? कितना होगा ये? Obviously y होगा. ओके, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि इफ द पॉइंट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ लाइज अबव एक्स वाई. Okay, I hope it is clear for everyone. Okay, now I'm going to take, if the point lies in the third quadrant. Okay,
So this is your horizontal plane and this is your vertical plane again. Now if the point lies somewhere here, let's say this is C point and the location again I am taking x comma y, and again for the front view the observer will be here and for the top view the observer will be here. Okay, so if the point lies in the third quadrant तो हम technically क्या बोलेंगे कि point x is sorry point C is x mm. x mm क्या होगा ये obviously x mm, this is x mm, so x mm behind, टेक्निकल नेम क्या होता है बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, और y mm ऑब्वियसली y mm क्या होगा y mm बिलो होगा. ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब हम क्या करेंगे नाउ वी नीड टू डू दी we need to draw the projection. So now look at here. For the front view, if we'll see this point, इसका image कहाँ मिलेगा exactly इस vertical plane में मिलेगा, and this point will be obviously C dash. Okay, and if I'll see from the top, this plane will become transparent. तो ये जो rays of light है, ये जो projector है वो आके इस पे इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट बैक करेगी, will be able to get the image somewhere here. तो इसका नाम क्या होगा, ऑब्वियसली ये टॉप व्यू है तो हम विदाउट डैश लिखते हैं, और ये कितना डिस्टेंस होगा x mm होगा. और फिर एज पर द रूल हम क्या करते हैं, एज पर द रूल वी नीड टू रोटेट द प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कौन सा प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो ये भी प्लेन, ये भी पॉइंट क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द ओरिजिन, ये रोटेट होगा. तो यू विल बी एबल टू गेट दी सी पॉइंट इन दी वर्टिकल प्लेन. तो ये कितना डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस वाज y, और ये कितना था बेटा x था, क्योंकि ये इसके पैरेलल था तो ये x mm इधर ट्रांसफॉर्म हो गया. अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अगेन विल टेक दी x एंड y, दिस इज द रेफरेंस लाइन. तो आपको फ्रंट व्यू जो है वो क्या मिल रहा है, बिलो मिल रहा है. तो हियर यू आर गेटिंग सम सी डैश. सो विल जॉइन विथ प्रोजेक्टर, हमने इसको ज्वाइन किया, और हियर यू आर गोइंग टू गेट दी टॉप व्यू. सो दिस इज नोन एज सी. ओके, और ये इसका डिस्टेंस कितना है, अगर मैं इसका डिस्टेंस लिखूं तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, this is nothing but x mm, you can see, and this is from the reference plane, this is y. okay, आप चाहे तो इसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इट विल लुक लाइक दिस. okay, you can convert into 3D also. So this point will become the xy line. तो we are drawing with, तो जब आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को बेटा रोटेट करोगे तो ये xy लाइन क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा, और ये प्लेन एग्जैक्टली फिट हो जाएगा. तो आपको एग्जैक्टली जैसे आपका कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि फ्रंट व्यू जो है वो बिलो हो गया, बिलो और xy, और टॉप व्यू क्या हो गया, अबव एक्स वाई हो गया. ये एग्जैक्टली exactly आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट से अपोजिट हो रहा है. देखो उसमें फ्रंट व्यू बिलो था, इसमें फ्रंट व्यू अबव, इसमें सॉरी फ्रंट व्यू, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसमें फ्रंट व्यू अबव था, इसमें फ्रंट व्यू बिलो है. ओके, एग्जैक्टली ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अपोजिट होता है. ठीक है, आई होप you don't have any doubt. Now the last one I'll take कि if the point lies in the fourth quadrant, कि point आपका कुछ यहाँ पे lie कर रहा है, this is your horizontal plane and this is your vertical plane. अभी तक मेरे हिसाब से सबको clear होगा. Now this is D and let's say the location is again x comma y. तो ऑब्वियस सी बात है फ्रंट से अगर हम लोग देखते हैं तो अगर मैं इसको बात करूं फ्रंट से, दिस इज योर फ्रंट व्यू एंड दिस इज योर टॉप व्यू. तो लोकेशन क्या होगा पॉइंट का, अगर मैं लोकेशन बोलूं तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाई एम एम क्या होगा, बिलो एक्स वाई, या हॉरिजॉन्टल प्लेन, वी आर राइटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड एक्स एम एम इन front of vertical plane. This is the location of the point. So this is xmm. Okay. Now I'm going to observe the front view and top view. ओके, सी. तो फ्रंट व्यू से जब देखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है रेज ऑफ लाइट कुछ इधर से आएगी तो इसका इमेज कहाँ मिलेगा, वर्टिकल प्लेन में मिलेगा. ओके, तो इसका नाम क्या होगा, फ्रंट व्यू का हम विद डैश लिखते हैं. अब टॉप से देखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस प्लेन में, क्योंकि इमेज हम सिर्फ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में देखते हैं. तो ये एक्स एम एम होगा, ये वाई एम एम होगा, और एज पर द रूल क्या करते हैं 90 डिग्री रोटेट करते हैं. यहां पर भी मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्स इज लेस देन वाई, मतलब 10 है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 20 है. ओके, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे अबाउट द ओरिजिन तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट रोटेट होके कुछ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. अगर ये मान लीजिए कि एक्स एम एम बड़ा होता तो ये एक्स एम एम इधर आता आपका, राइट. तो देर इज नो अदर नो डिफरेंस इन दैट, राइट. तो इस पॉइंट का नाम होगा डी, बिकॉज दैट्स द टॉप व्यू. तो अब हम इसको अगर एक्स वाई लाइन पे ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा,
it will look like this कि the point is, मतलब यहाँ पर आपको दो पॉइंट दिखेंगे, दोनों कहाँ दिखेंगे, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. Here you will get d dash and here you are getting d. So this distance is how much? ये कितना है? ये x mm है, और ये कितना mm है? ये y mm है. ये given है. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों कहाँ लाई करते हैं? लाइज बिलो एक्स वाई. तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट के अपोजिट हो गया. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू क्या हो रहा था? एवव लाई कर रहा था. यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है? बिलो हो रहा है. तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाई second and fourth angle of projection is not preferable. So the reason is the front view and top view coincide to each other. इसलिए हम लोग इसलिए हम लोग सेकेंड एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं फॉलो करते. ओके. Now, in the next class, I'll start with the projection of point. I hope I have cleared everything. If you have any kind of doubt, please write in the comment box. Please do subscribe my channel. Thank you, everyone. Thank you, students.